Very good morning to all of you. Welcome to Shriram's IAS. Today, in a series of the 2025 UPSC CSE mains paper discussion, we'll be taking up GS1. Okay, and in that part, we'll focus on the history segment. In history, as you know, this year also 6 questions came, 3 10 marker and 3 15 marker. So we'll just look into how to approach those questions and what you could have done better. And for all the aspirants जिन्होंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया है, जो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वी कैन से फाउंडेशनल स्टोन रहेगा, सो एज टू प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन अपकमिंग टाइम. ओके, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, लेट्स टॉक अबाउट the various offers which is provided by Shriram's IAS and which is the 1:1 mentorship which we provide to all of you free of cost. It is a one-time session and you can come and avail it and start your UPSC journey in a judicious and we can say economical manner. Okay. Now let's look into the very first question which was asked from GS1 paper and which was related to the Harappan civilization. It's a very basic question. इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए बिकॉज आप सबको इसका आंसर कहीं ना कहीं आता होगा. लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में जो इशू हो जाता है वो ये है कि कहीं ना कहीं यू माइट हैव थॉट कि आर यू मिसिंग सम पॉइंट और नॉट. इफ़ यू आर मिसिंग सम पॉइंट देन दैट्स अ कंसर्न. अदरवाइज इट्स जस्ट आस्किंग अबाउट द सेलिएंट फीचर्स. इस क्वेश्चन के अगर आप कीवर्ड को देखेंगे तो पहला तो डायरेक्टिव वर्ड डिस्कस है, जिसमें कि यू नीड टू डिस्कस ऑल द वेरियस एस्पेक्ट्स which the Harappan architecture imbibes and then the salient features of it, all the salient features. तो इसके अंदर टाउन प्लानिंग से लेके ड्रेनिंग सिस्टम से लेके जो ग्रेट बाथ हो गया या फिर ग्रेनरीज हो गई, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके. ओके, सो लेट्स लुक इनटू हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस step by step. First of all, we look into the introduction part. See, in introduction you just need to talk about the relevance of Harappan civilization as compared to what was happening in those times. It was an urban civilization. 1900 से लेके 1900 BC से लेके 2500 BC तक, or the other way around one must say 2500 से इस पीरियड के अंदर दिस वाज बेसिकली द फोकस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन विच वाज द मैच्योर वन. ओके, बट नाउ यू नीड टू लुक इनटू व्हाट बेसिकली दिस मेंट एंड इन दैट यू नीड टू मेंशन द इंट्रोडक्शन एडवांस टाउन प्लानिंग, एडवांस्ड टाउन प्लानिंग which was a major factor or major feature of the Harappan civilization. Then it will be standardized construction techniques, and last but not the least, the various civil amenities. Got it? Now these three factors should be the part of your introduction, and if these are the part of your introduction, that introduction is enough. Because introduction में actually करना क्या होता है, आप आगे जिन चीज़ों को explain करने वाले हो उसका एक precursor देना होता है, and if you are able to do that, then that is enough for it. Now let's move into the most important part which is the body of the answer. अब जहाँ तक body का सवाल है इस particular question के अंदर, बॉडी के केस में व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू मैनेज, व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू राइट. सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाउन प्लानिंग एंड ग्रिड पैटर्न. एज यू ऑल नो, this is the first and the foremost most important part of it. Next is use of standardized material. The next one is public architecture. Okay,
Public architecture, as you all know, the various public architectures which were available in Harappan civilization, like Great Bath or granaries. So these kind of things need to be mentioned in this kind of question. Next is residential buildings. Sorry. And last but not the least, the absence of monuments या temples or palaces. So these are the few points on which you can ponder. Now how to ponder over them? केवल ये लिख लेने मात्र से फर्क नहीं पड़ेगा. You have to substantiate them also. Now town planning और grid pattern के बारे में, as you all know, that they used to intersect at 90 degrees. So you need to mention them, that this was the key feature of this particular kind of town planning. Then there was proper division. There was citadel and the lower town. Citadel भी था और lower town भी था. और ये एक फीचर जो था, ये आपको कुछ जगहों पर 3 सेक्शन से बटा हुआ भी दिखेगा. It was not that there were only 2 sections to the Harappan cities or Indus Valley cities. There were 3 sections also. But the grid pattern which used to cut all the streets at 90 degree, it is a very important factor, and that you need to mention in your answer. Now another one is use of standardized material. Burnt bricks were used to construct anything. बर्न्ड ब्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहां पर, क्योंकि अगर आप मोहनजोदाड़ो के ग्रेट बाथ को भी देखेंगे तो उसका जो सरफेस है, जो उसकी डेप्थ है, जहां पर की पानी इकट्ठा होता है, वहां पे भी दे हैव यूज्ड बर्न्ड ब्रिक्स. तो बर्न्ड ब्रिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था हड़प्पन आर्किटेक्चर का. लेकिन साथ ही साथ कुछ जगहों पर उन्होंने स्टोन्स भी यूज किए हैं, लाइक धोलावीरा. तो कहने का मतलब यह कि कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी भी थी. It wasn't that they were stickler to only burnt bricks. They also used stones wherever it was available in a particular format. Got it? So that is a feature which you need to look into. Now, public architecture. Now देखो, जहां तक public architecture का सवाल है, you all know Great Bath, granaries, ये सारी के सारी चीजें जो हैं, ये as public architecture available थी in हड़प्पन आर्किटेक्चर. ग्रेट बाथ के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना है कि इसे रिचुअलिस्टिक अफेयर के लिए यूज किया जाता था, बट देयर इज नो प्रूफ टू दैट. बट ऑफ कोर्स, एज फार एज द एक्सटेंट ऑफ दिस बाथ इज कंसर्न, वन कैन से दैट इट वाज यूज्ड फॉर रिचुअलिस्टिक वेज. और ऑफ कोर्स ये सिटाडेल में प्लेस था, मोहनजोदाड़ो में. कहने का मतलब जहां पर उस पर्टिकुलर सिटी के जो एफ्लुएंट लोग रहते थे, ये उसी सेक्शन में अवेलेबल था. जहां तक ग्रेनरीज का सवाल है, इट वाज यूज्ड टू स्टोर ग्रेन. और यही ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन एक सरप्लस बेस्ड सिविलाइजेशन था. वो सरप्लस पे काम करता था, और यही जो सरप्लस है ये उनको ट्रेड फैसिलिटेट करता था. आप इस बात को समझिएगा कि जब भी कोई सिविलाइजेशन या कोई सोसाइटी सरप्लस डेवलप कर पाती है, तभी वो ट्रेड करने के लिए सक्षम हो पाती है. तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है, और आप इस बात का ध्यान रखिएगा. इसके अलावा रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स. नाउ सी, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. दो पैलेसेस वर नॉट अवेलेबल, बट सिटाडेल के जो घर थे, कहने का मतलब जहां पे एफ्लुएंट पीपल रहते थे, वो घर थोड़े से कंपैरेटिवली बेटर हुआ करते थे. लेकिन वहीं जो घर थे बाकियों के भी, लोअर लेवल्स पे भी जो घर थे, या लोअर क्लास के भी जो घर थे, उनमें भी यू कुड वेरी वेल सी दैट दे वर 2-storied. Okay, there were 3 to 4 rooms, they were 2-storied, there were proper amenities available, proper drainage available, and all these kinds of things should have been mentioned while answering this particular question as far as salient features of Harappan civilization is concerned. Okay, next is, अब जब यहां पर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात करेंगे तो वहीं पर आपको कहीं ना कहीं जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी बात भी करनी पड़ेगी, विच वॉज सो मच एलैबोरेट दैट इट वॉज मिसिंग एंड कंप्लीटली मिसिंग इन अदर मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशंस. इट्स अ वेरी यूनिक फीचर. सच अ डिटेल्ड ड्रेनेज सिस्टम was available only in Harappan civilization. So you need to mention it while mentioning everything else. Now the next one is absence of monumental
टेम्पल्स ऑब्लिक बिल्डिंग. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हम अभी तक नहीं जान पाए हैं कि क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन कोई रिलीजन को फॉलो करती थी. ऑफ कोर्स वी हैव फाउंड वेरियस एमुलेट्स एंड सील्स who has mother goddesses figures, and then there is great bath which tells there was some kind of ritual which was being performed. But was the whole religion thing an organized religion? Was it a structured religion? That we are yet to know. So that's why what we see is that there is absence of temples as it was available in Egyptian civilization. So that is also a salient feature of the Harappan architecture, because these all things were missing which were available or which were present in other civilizations. Got it? Now, how to conclude these kind of questions? You need to conclude these kind of questions by basically telling that there was certain level of urbanism in the ancient world which was missing later on. आप इस बात को समझिए कि बहुत ही लंबे पीरियड तक आफ्टर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो प्रॉपर अर्बनाइजेशन है वो मिसिंग था फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ऑफ कोर्स अब कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं किलारी और ये सब के, लेकिन स्टिल दे आर येट टू बी सब्सटेंशिएटेड एंड येट टू बी एक्सेप्टेड इन आवर कोर्स बुक्स. So that's why we'll stick to what our NCERTs say till now, and what NCERTs tell us is that for a very long period of time, till the Mauryan Empire came into being, then only a certain level of urbanization was seen. So the urbanism was a very characteristic feature of Harappan civilization, and that you need to mention in the conclusion. Okay, and that is how you need to mold this or structure the conclusion of these kind of questions. Got it? Now let's move to the next question, which was a very good question according to me. Why? Because ये काफी कंटेक्चुअल चल रहा है कि किस तरीके से जो मुगल हिस्ट्री है उसको इंटरप्रेट किया जाए, और शायद उसी कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं यूपीएससी ने क्वेश्चन डाला है, बिकॉज दे वांट अस टू नो दैट of course whatever is the political discourse, but we need to look into all the various aspects of our history, and Mughals were a very important element of it. So let's look into the question first. The question asks you, examine the main aspects of Akbar's religious syncretism. Okay, again it's a 10 marker question which you need to write in at most 150 words. This is the word limit. Okay, now what to do in these kind of questions? See, try to understand Akbar's religious syncretism के अंदर जो भी आपकी aspects आते हैं वो सारे के सारे आपको mention करने हैं. But how to start these kind of questions? For that you just need to give a basic, what you can say, gist of or precursor to what you are going to write in the body, as I told in the earlier question also. Okay, you can't be contextual in these kind of essays, these kind of questions, and again you can't be contextual because it is not a current affairs based question. But you need to just tell that about Akbar, that despite of the various expansionary activities which Akbar was going on or Akbar was conducting, he was still able to construct or form a certain kind of empire where religious syncretism was a major feature. And for that, the major aspect which he used was Sulh-e-Kul. What is Sulh-e-Kul? Peace for all. It was a policy. It was different from Deen-e-Ilahi. Try to understand me. Sulh-e-Kul was a policy. You can compare it with Ashok's Dhamma also. After or once Akbar was able to expand his empire to a certain extent, to whatever satisfaction he was having, after that he tried to consolidate, he tried to create harmony between the various communities which are living in India, and India was always a very diverse country. So it was required also for the empire or the emperor to conduct these kind of policies or to implement these kind of policies so as to take care of their subjects. So this thing you need to mention in the introduction part, that despite of the various expansionary activities or in spite of it, he believed in religious syncretism, and you can mention about Sulh-e-Kul, which you will explain in the body. Okay, now let's look into the body part.
Now, the body of this particular question will basically tell about the various aspects or the main aspects of Akbar's religious syncretism, and the first one is policy of Sulekul. Okay, the next one is interfaith dialogue, Ibadat Khana. Okay, and another is marriage alliances and social reforms. The next one is Deen-e-Ilahi. And the last but not the least one is patronage to diverse traditions. Got it? Now, we need to look into all these, what we can say, subheadings one by one. Now, what is policy of Sulekul? Policy of Sulekul basically tried to create harmony and tried to imbibe tolerance for various diverse trends or diverse trends as far as religions go or the sects go in the Mughal Empire. वो शांति बनाने के लिए था, एक सौहार्द बनाने के लिए था अलग अलग कम्युनिटीज के लिए विद इन द मुगल एम्पायर. तो इसके अंदर दे यूज टू हैव रिलीजियस डिस्कोर्सेज between the people of various different religions in India which were on Indian subcontinent, Hinduism, Mohammedan or basically Muslim Islam, then Zoroastrianism, Sikhism and all these kind of Jains. So all these kind of people used to come and have the discourse so as to reach a common ground of peace. If they can't reach a common ground of religion, then at least they can find a common ground of peace. And that was the whole purpose of this particular policy. Now, under the ambit of this policy only, Akbar abolished jizya. Okay, he abolished jizya and pilgrimage tax. तीर्थ करने पर अगर आप दूसरे रिलीजन के हैं तो एक टैक्स लगता था और उसको बेसिकली अकबर ने अबॉलिश कर दिया था. और ये अकबर की बहुत ही अच्छी पॉलिसी थी जो कि सुलह कुल के लाइन से अलाइंड थी, सुलह कुल के थॉट से अलाइंड थी. गॉट इट. इसके अलावा एक और चीज जो अकबर ने की थी वो ये थी कि एडमिनिस्ट्रेशन में हर रिलीजन का आदमी उनके रहता था. और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अकबर की जो पॉलिसी है सुलह कुल है सो एज टू क्रिएट द हार्मनी और द कम्युनल हार्मनी among various religions or various people in Indian subcontinent. ये उसका एक जीता जागता सबूत है. So that he wanted to honor or respect the religion of all the various subjects in his empire. For that he used to take people from all the kind of communities, all the kind of religions in his administration. Got it? Another one is interfaith dialogue, इबादत खाना में. Again ये जो dialogues होते थे ये सबके सब इबादत खाना में होते थे, which is a building in फतेहपुर सिकरी विच वॉज द फोर्ट ऑफ अकबर, जहां पे बुलंद दरवाजा भी है. और वहां पर डायलॉग्स होते थे इसमें कि मुस्लिम थियोलॉजियंस, हिंदूज, जैन्स ये सब बैठ के बात करते थे और कहीं ना कहीं कॉमन ग्राउंड तक पहुंचने की कोशिश करते थे. तो ये भी अपने आप में रिलीजियस सिंक्रेटिज्म का एक बहुत ही मेजर एस्पेक्ट है ऑफ अकबर्स पॉलिसीज. अनदर वन इज मैरिज अलायंसेस एंड सोशल रिफॉर्म्स. एज वी ऑल नो, अकबर वेंट फॉर मैरिज अलायंसेस विद राजपूत प्रिंसेसेस. कच्छवा प्रिंस का उसमें एग्जांपल है बहुत अच्छा. तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं यहां पर इट्स अ टेस्टिमनी ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म. और जहां तक सोशल रिफॉर्म्स का सवाल है, अकबर ने सती को प्रोहिबिट किया था. साथ ही साथ अकबर ऑल्सो व्हाट अकबर डिड इज दैट
Widow remarriage was promoted by him. So these were few things which he tried to imbibe or tried to introduce in his empire, so that the people can live in harmony, as well as they also address some reforms. Even जो शादी की एज भी थी उसको भी बढ़ाने की कोशिश की थी अकबर ने. तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो बेसिकली टेस्टिमनी है टू अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, दैट हाउ ही वाज इन्वॉल्वड इन द वेरियस रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स आल्सो. द नेक्स्ट वन इज दीन-ए इलाही. नाउ सी, दीन-ए इलाही वाज अ स्पिरिचुअल पाथ, यू कैन से, इन विच द बेस्ट ऑफ ऑल द रिलीजियंस वाज टेकन अप. ऑफ कोर्स दीन-ए इलाही उतना नहीं बढ़ पाया था, और जो उसके अपने कोर्ट के लोग थे उनमें से भी काफी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था. लेकिन एटलीस्ट ये अकबर के रिलीजियस सिंक्रेटिज्म को दिखाता है, क्योंकि ही वांटेड टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड बिटवीन द वेरियस रिलीजन्स. नाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सुलेकुल. सुलेकुल वाज अ पॉलिसी. दीन-ए इलाही वाज अ स्पिरिचुअल ऑर्डर. ओके, दीन-ए इलाही वाज अ स्पिरिचुअल ऑर्डर. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड between the both of them. Okay, so Deen-e Ilahi again a testimony or the major aspect of Akbar's religious syncretism. और इसके अंदर बेसिकली अकबर का पर्पस ये था कि किस तरीके से एथिकल कंडक्ट या सन्स वर्शिप और इस तरह की चीजों को इंट्रोड्यूस कर पाए, और इसी कारण से ये थोड़ा सा रेडिकल आइडिया भी था, और इसी कारण से इसे काफी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया. इवन अकबर के अपने जो बहुत ही खास लोग थे, दे इवन रिजेक्टेड इट, and even he had to face a lot of difficulties from Suhrawardis. Suhrawardis was basically we can say Sufi order, and he had to face a lot of issues from Suhrawardi Sufi order Sufists, and that was a major reason that Deen-e Ilahi couldn't prosper that much, because it was radical in its thought. It tried to take the best of all the religions, but then a lot of people got confused that it's a religion in itself, but as per Akbar's own sayings, it was a spiritual order. Okay, now the next one is patronage to diverse traditions. Now see, in the various acts of Akbar, we can notice that, like, he invited Jesuits from Goa, Jesuit Christians from Goa. Then again, he tried to have discourses with Jain monks also, and at the same time he tried to get the Mahabharata translated to Persian. Which is known as Razmanama. Now, these kind of value addition points, you have to mention these kind of questions so as to substantiate your argument, and it will basically help you to fetch good marks. Got it? Now, how to structure a kind of conclusion for this kind of question? For that, you need to look into the various aspects of this particular policy of Akbar of religious syncretism. Then you need to imbibe or need to mention that pragmatism was pragmatism कहने का मतलब हिंदी में यथार्थ ही बोलते हैं. Pragmatism was the major goal or the major driver of whatever Akbar was doing on the name of religious syncretism. Pragmatism in the blend of tolerance, dialogue and reform. Okay. Okay. So this kind of thing need to be mentioned in the conclusion of these kind of questions, so as to make the evaluator understand that you have understood the real aspect of Akbar's religious syncretism. Okay. So as far as this particular question is concerned, I guess all the aspects has been covered. Now let's move to the next question. The next question is a very unique question which came this year. A lot of students might have felt issues while handling this kind of question. So let's first of all write this question. The question is, the sculptors
The sculptors filled the Chandela art form with resilient vigor and breadth of life. Okay, elucidate. Now once it says elucidate, try to understand, you need to mention the various aspects of the sculpturing during the Chandelas. And you need to be very much specific about how the various, we can say, the sculpturing technique has been used to bring out the vigor as well as the breadth of life in the various Chandela art forms. You need to be very specific about it. जैसे कि त्रिभंगा पोज ही हो गया, you need to mention त्रिभंगा pose. You need to mention about the apsaras which were drawn or which are made on those temples, Khajuraho temples. So that's why you need to be very much specific about, because the tail word here says elucidate. Got it? Now how to approach this kind of question? First of all, just not panic on these kind of questions. These can be handled very easily if you don't panic. You know everything about these kind of art forms. ऐसा नहीं है आपसे कुछ अनभिज्ञ है. You know all these kind of things. It's just that how you write an answer. For writing an answer for this kind of question, what you need to do is that first of all go step by step. First of all, let's handle the introduction part. अब इंट्रोडक्शन में क्या करना है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मेंशन करना है कि जो चंडेलास थे, if you know their year of reign, it is well and good. ठीक है, 9 to 11th century और 13th century, सॉरी. पहले तो आप ये मेंशन करिए, साथ ही साथ ये मेंशन करिए कि they used to rule over बुंदेलखंड. इसके साथ आप मेंशन कीजिए अबाउट खजुराहो टेम्पल and simultaneously mentioned that it has been granted UNESCO World Heritage Site status. Got it? तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जब आप बढ़ेंगे तो you'll be able to answer these kind of questions quite comfortably. Okay? Next, what you need to do is that you need to talk about the various aspects of the Chandela sculpture. Okay, which is the part of body. Now, what to write in that? In the body of this question, the various things which you need to address is, the first of all is dynamic depiction of life. Next is integration of the secular and sacred. Okay, first aspect, second aspect. What about the third aspect? Third is abhinay and expressiveness. The next aspect is symbolism and cosmic order. And last but not the least, technical excellence. Got it? So these are the aspects you need to delve into. Now, dynamic depiction of life. While explaining the dynamic depiction of life, what you need to do is that you need to talk about the sculptures and how they infuse resilience and vitality. Okay?
एंड हाउ वर दे एबल टू डू दैट? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से फिगर्स अपीयर एनिमेटेड, जो एनिमेटेड फिगर्स है उनके थ्रू रेजिलियंस और वेटालिटी, वेटालिटी कहने का मतलब उनका इंपॉर्टेंस, ये इंक्लूड कर पाया बाय रिलेटिंग इट टू द sorry reality. Okay, now this is something which you need to mention, and in that you need to mention about Tribhanga. त्रिभंगा पोज, जिसमें 3 जगह बॉडी में लोच आता है. लोच कहने का मतलब अ काइंड ऑफ एंगल, अ काइंड ऑफ कर्व हैपेंस. तो त्रिभंगा पोज यहां पे बताना जरूरी है कि उसी के थ्रू दे वर एबल टू गेट विटालिटी एंड द ग्रेस. गॉट इट? नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेक्युलर एंड द सेक्रेड. जहां तक सेक्रेड और सेक्युलर का सवाल है, यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू इमेजिन what has been done on the Khajuraho temples, and you need to write in that context only. Okay, in that celebration of fertility, is a very important factor and is secular by nature. Celebration of fertility is not to do only with one religion. It can be found in n number of places and religion. Then there is cosmic creation, union of divine and human. कहने का मतलब ये कि आप अप्सरास के जो फिगरीन्स थे उनके बारे में बात करके, और साथ ही साथ जो स्कल्पचरिंग था उनका, उसके बारे में बात करके यू कैन टॉक अबाउट द यूनियन ऑफ ह्यूमन एंड डिवाइन, एंड दिस हाउ यू आर गोइंग टू इल्यूसिडेट what is being done in Chandela art forms. Next is अभिनय एंड एक्सप्रेसिवनेस. यहां पर आप समझिए बात को कि वेरियस भाव जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में दिए थे, that can be easily found in the Chandela art forms, and that you need to mention in this particular subheading as far as answering this particular question goes. Next is symbolism and cosmic order. तो इसके अंदर आप ये बात को समझिएगा कि कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन है वो किस तरीके से इस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म में डिपिक्ट किया गया है. गॉट इट? सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और इंपॉर्टेंट सबहेडिंग विच यू नीड टू एक्सप्लेन इन दिस. देन देयर इज टेक्निकल एक्सीलेंस, जिसके बारे में तो जितनी बात की जाए उतना कम है. टेक्निकल एक्सेलेंस इन द केस ऑफ हाई रिलीफ, डीप अंडरकटिंग एंड रिदमिक कंपोजिशन. तो ये सारी की सारी चीजें जो है दैट यू नीड टू मेंशन while answering this particular question. Of course it was a difficult question because usually जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं तो इतने डिटेल में हम खजुराहो के टेम्पल्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं. We just read that okay the various which can say explicit sculptures which were done there or art forms being made there, but we don't look into the various aspects of it. लेकिन अगर आपको आंसर राइटिंग का नैक है एंड इफ यू कैन ब्रेक इनटू वेरियस सबहेडिंग्स देन यू विल बी एबल टू हैंडल दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. गॉट इट? नाउ एज फार एज द conclusion of this kind of question is concerned, I would suggest you simply summarize what you have been writing in the whole body of this answer. Don't do too much experiment because there are chances of you going wrong. You can of course mention about the impact of the Chandela art forms on the Indian whole soul overall art. You can talk about it. Then you can also talk about the tourism and all, but that will become non-contextual. It is better to summarize the whole body itself. Got it? Now let's move to the 15 marker questions. Okay, 15 marker question. There was another question this time which was a kind of bouncer and which was about Jyotiba Phule. The question was Mahatma Jyotiba Phule Jyotirao Phule's writings and efforts
of social reforms touched issues of almost all subaltern classes. Discuss. Now, see, it's a 15 marker question. You need to write in 250 words. Now, in this kind of question, of course, as far as Mahatma Jyotirao Phule is concerned, it is a personality of concern while you are going through the prelims exam. But still, as far as Jyotirao Phule is concerned, you might have read about the various contributions of Jyotirao Phule towards the, we can say, deprived classes or depressed classes in Maharashtra specifically and in India in general. But still, how to write this kind of question, how to handle this kind of question, that we'll be looking into in this particular session. Now, as far as Jyotirao Phule's writings and efforts are concerned in the various fields, this question asks you कि केवल depressed classes या deprived classes के लिए ही नहीं किया उन्होंने हर subaltern class के लिए किया. तो सबसे पहले तो you need to mention that Jyotirao Phule was a social reformer from Maharashtra. Reformer from Maharashtra. और साथ ही साथ आपको यह भी मेंशन करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं he worked for the empowerment of various subaltern classes like women, peasants, okay, next lower classes, which of course he did primarily, and other marginalized classes. And what are these? These are all subaltern classes. जो भी दबी कुचली क्लासेस है वो सारी की सारी इसके अंदर आती हैं. And you need to mention that he worked towards the empowerment of or towards the justice of all these kind of classes of people, in which women also come, lower classes also come, then peasants also come, and other marginalized classes come. Okay, now let's look into what he did for each and every subaltern class, and that is what is required for you to write in this answer. क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि ज्योतिराव फूले जो है उन्होंने ऑलमोस्ट सारे सबल्टन क्लासेस के लिए कुछ ना कुछ किया, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके सोशल रिफॉर्म के लिए, और इसको डिस्कस करने बोला गया है. तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सारे के सारे जो ये सबल्टन क्लासेस हैं उनमें कंट्रीब्यूशन क्या रहा ज्योतिराव फूले का, इसको आप बताएं. Okay, so what will be included in the body of this particular question? Now the body of this question will comprise of, first of all, against caste oppression. In that you need to mention about Gulamgiri, his best work in the field in which he used to work, and in that you need to mention that in this he mentioned about the exploitation of Shudras and Ati Shudras by Brahminical traditions. Got it? This is the most important factor of it. Then again you need to mention about Satya Sodhak Samaj. Or Truth Seeker Society, which basically worked for the lower caste and tried to imbibe unity among the various classes which were there in the society.
Okay, so these two things you need to mention first of all, so that you are able to substantiate what his writings and what his works were in the field of empowerment or upliftment of the lower classes. The next one is women's empowerment. Okay, this was the first one. The second one, now in the field of women's empowerment, Jyotirao Phule was blessed with a very we can say very radical and very progressive wife, who's known as Savitribai Phule. So along with Savitribai Phule, he was the pioneer of establishing the school for girls in Pune. It was one of the earliest schools established for girls in that part of the world. So that's why it's a very important contribution of Jyotirao Phule along with his wife. Apart from that, he also tried to advocate for widow remarriage. Okay, and he also established some places for old and destitute women. Got it? जो बूढ़ी और बेघर औरतें थी उनके लिए उन्होंने रहने का भी बंदोबस्त किया. अपार्ट फ्रॉम दैट ही ऑल्सो कंडेम्ड सती एज अ प्रैक्टिस. और इसी के साथ वील मूव टू द क्रिटिक ऑफ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी. First of all, look into what he did for peasants. Okay, जहां तक peasants and agrarian issues का सवाल है, okay, peasants and agrarian issues का तक सवाल है, then we need to mention about शेतकऱ्याचा असूद. And this was his work in which he talked about the exploitation of peasant by the zamindars or the landlords. So this particular thing need to be mentioned in this so as to make the evaluator understand that you know what he did towards the peasant reform. Next is, of course, religious orthodoxy or the critique of it. Now, as far as religious orthodoxy is concerned, he was concerned with the rationalism and the humanitarian values, and that he showed in his work also when he even introduced or established Satyashodak Samaj. It was done to bring harmony among the various classes, the lower as well as the upper. So that's why his rationality towards all these things shows that he was very much concerned about all the subaltern groups. नेक्स्ट इज इंक्लूसिवनेस ऑफ सबल्टन कंसर्न्स. जहां तक सबल्टन कंसर्न्स का सवाल है, आप इस को समझिए कि जो ज्योतिराव फूले थे उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया वेरियस अलग सबल्टन क्लासेस में, एंड दैट इज द टेस्टिमनी ऑफ दैट he did social reforms for almost all of the subaltern classes. Now what to write in the conclusion? In the conclusion, you need to mention or basically summarize what he did. But apart from that, for a value-added point, you can write and mention that Jyotirao Phule's works and social reforms were basically an inspiration for the upcoming Dalit leaders like Periyar and Ambedkar. Okay, and through that you can conclude your answer. Got it? Now let's move to the next question. Again, a very good question. First of all, let's write this question. This question is trace India's consolidation process during early phase
During early phase of independence, in terms of polity, economy, education, and international relations. Okay, again it is a 15 marker question. You need to write in 250 words at most. Got it? Now let's talk about the early phase of independence. Early phase of independence में leaders like Nehru, who led the country from the front, they were interested in the various aspects like polity, economy, education, international relations, and as you know, Nehruji's contributions were huge during that period. And that you need to mention that despite of various challenges like partition, poverty, illiteracy and all these kind of things, India did some work in these particular fields उस टाइम पे जब हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे और ना ही सपोर्ट था किसी बड़े पावर का, उस टाइम पे हमने इस तरह की एक्टिविटीज जिसके अंदर की पॉलिटी, इकोनॉमी, एजुकेशन और इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई एक्टिविटी हो पाए, इस पर हमने काम किया. Got it? And that's what you need to mention in the introduction part. Got it? Now next, let's look into the various aspects one by one. First of all, in introduction, you need to mention that in early years of not only independence, consolidation also, because there were a lot of princely states, okay, they had to be brought together so that India can be structured into a particular nation. तो ये सारी एक्टिविटीज की गई थी, तो कंसोलिडेशन भी हुआ था, और वी वर ए न्यू कॉलोनियल पावर ऑल्सो, एंड दे वर रैथ्स ऑफ लाइक पार्टीशन, पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स. ये सारी की सारी दिक्कतें थी, इसके बावजूद भी इस फील्ड में हमने काम किया. तो ये बात हमको इंट्रोडक्शन में मेंशन करना बहुत जरूरी है. नाउ व्हाट टू राइट इन द बॉडी. In the body of the answer, you need to handle all the aspects one by one. The first one is polity. In the polity aspect, we need to mention about the adoption of constitution, which is the first and foremost thing. आप ये बात समझिए, उस टाइम पे एक नए नेशन होने के कारण हम पर एक्सपेक्टेशंस जो थी वो बहुत ही कम थी फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, बट स्टिल वी ट्राइड टू ब्रिंग अप, because we established ourselves as a democratic country and a republic. That's why we had to come up with a very profound and very elaborate constitution, and that's what our constitution makers did. They created a very elaborate and India centric constitution. So that you need to mention, and in that you need to categorically mention about the sovereign socialist secular democratic republic nature of our country. Got it? नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स मैंने आपको पहले ही बताया. सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. द नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स डन बाय सरदार पटेल. ओके, विद द असिस्टेंस ऑफ वीपी मेनन. ओके, इसके अलावा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. आप समझिए उस बात को, जब हमारे देश की लिटरेसी रेट इतनी कम थी और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये डर था कि लोगों के अंदर अभी एक आजाद मुल्क होने का या आजाद मुल्क के सिटीजन्स होने की समझ नहीं है, उस टाइम पे ये डिसाइड करना कि नहीं, वी आर गोइंग टू हैव एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. सारे के सारे लोग जो 21 या 21 साल से अबव के हैं वो वोट कर सकते हैं.
ये डिसीजन लेना उस टाइम पे एक वाटरशेड इवेंट था। ओके, इसके अलावा थिंग्स लाइक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट which basically helped to implement land reforms, because right to property was a fundamental right at that point in time. So how to do land reforms? ये जो skewed land का distribution है across India, इसे कैसे सेटल किया जाए? एक इंसान जो टिलर है, जो काम करता है खेत पर, वो खेत को ओन नहीं कर सकता है क्योंकि वो खेत किसी जमींदार का है। इन्हीं सब कारणों से लैंड रिफॉर्म्स लेके आया गया, बट बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विद राइट टू प्रॉपर्टी, first constitutional amendment act was implemented in which the various reasonable restrictions was also given, as well as right to property was basically taken away, but it was taken away later on in the 44th is what it was taken away and turned into a constitutional right. But even in the first constitutional amendment act it was made toothless. Got it? The next is state reorganization act. आप सब जान ही रहे हैं, आपने पढ़ा ही होगा कि स्टार्टिंग में हमारे जो नेशन बिल्डर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो इनिशियल लीडर्स थे, दे वर नॉट इन फेवर ऑफ, द इंपॉर्टेंट वर्स, दे वर नॉट इन फेवर ऑफ डिवाइडिंग द इंडियन स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस, ओके, और डिवाइडिंग इट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस. बट लेटर ऑन, आफ्टर व्हाट हैपेंड इन आंध्र प्रदेश बाय द सुसाइड ऑफ और सेल्फ इमुलेशन ऑफ Shiramoolu, the state reorganization act was passed on the basis of Fazal Ali Commission, and then the states was reorganized on linguistic basis, and eventually it is observed that कि इस तरीके से जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल कल्चर है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए डिवीजन करने से देश जो है वो स्ट्रेंथन ही होता है. Okay, but in initial years there were a lot of dilemma over how to approach this reorganization, and that's why a lot of committees were made, but eventually after the recommendation of Fazal Ali Commission, the states were reorganized on the basis of language. Got it? Next is economy. Now, in case of economy, what we can see that we adopted Nehru Mahalanobis मॉडल, जिसके अंतर्गत की बहुत सारे डैम्स, PSUs ये सब खोले गए. आर यू गेटिंग मी? एंड देन नेहरू बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द planned economy of USSR started 5-year plans, in which a plan was set at the starting of the 5-year and it was tried to achieve, or the whole machinery tried to achieve those particular goals within the upcoming 5 years. तो ये 5-year plan जो है ये वहीं की उपज है, जो खैर अब तो डिसबैंड कर दिया गया है, बिकॉज इट इवेंचुअली लेड टू हिंदू ग्रोथ रेट. हिंदू ग्रोथ रेट एक डेरोगेटरी टर्म है, जो कि 80s में पाया गया कि जो इंडिया की ग्रोथ रेट है वो इतनी ज्यादा कम है कि इंडिया कैन नेवर बी अ डेवलप्ड कंट्री. एंड देन इंडिया adopted the liberalization, privatization, globalization, LPG reforms, and eventually now India is one of the fastest developing nations in the world. But at that point in time, this 5-year plans were basically implemented so as to give employment to people as well as to invest in the manufacturing sector. Got it? So these things need to be mentioned. Apart from that, community development programs, आर ऑल्सो सपोज टू बी मेंशन्ड. कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो बेसिकली कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जो चीजें लाई जा रही हैं उनके बारे में था. इसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स भी मेंशन करना बहुत जरूरी है. और इन सारी चीजों को समझते हो आप ये बात भी समझिएगा कि नेहरू जो है उनका, पंडित नेहरू का बहुत इंपॉर्टेंट टेक था टुवर्ड्स PSUs, एंड ही बिलीव दैट PSUs वर टेम्पल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. He was so much looking forward to the development of PSUs. PSUs basically stand for public sector undertakings. जिन particular companies के अंदर सरकार का at least 51% stake है वो PSU कहलाते हैं. और initially जो बड़े बड़े PSUs आप देखते हैं, NTPC, HPCL and all these kind of these kind of, or we can say SAIL, Steel Authority of India, or these kind of IOCL, Power Grid, which of course
was established with a different name then, but these all were established by Pandit Nehru on the base of Nehru-Mahalanobis model. Okay, the next one is education. In the field of education, again a lot of reforms are brought during the initial period, जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो 1948 में एस्टेब्लिश कर दिया गया था, इसके अलावा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसके साथ ही साथ यू मस्ट हैव सीन दैट देयर वाज अ इंस्टेंट एक्सपेंशन ऑफ वेरियस IITs, IIMs एंड एम्स, जो कि आज भी यू कैन से दैट दे आर होल्डिंग द होल फोर्ट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. आज भी जो इस फील्ड के एपिटमी है वो IIT, IIMs और एम्स हैं. जैसे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हो गया, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हो गए, चाहे वो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हो गए. आज आप देखेंगे कि दिल्ली में एम्स में कितने लोग इलाज कराने के लिए आते हैं. तो इन सब बातों की जो आधारशिला है वो उसी टाइम रखी गई थी. इसके अलावा जहां तक इंटरनेशनल रिलेशंस का सवाल है, आप देखिए नॉन अलाइंड मूवमेंट हो गया जैसे, या फिर पंचशील भी हो गया. आप समझिए दो पंचशील इवेंचुअली फेल्ड बिकॉज इंडो-चाइना वॉर हैपेंड, बट द initial steps taken by Pandit Nehru or initial steps taken during the early years of Indian independence were very radical by nature. उस टाइम पर जब we didn't have resources, उस टाइम पे ये सोच पाना कि हाँ हम किसी भी एक ग्रुप से नहीं जुड़ेंगे, ना नाटो से ना वार्सो पैक्ट से, और वी विल रिमेन एज सेपरेट एंटिटी, और इस बात के लिए बाकी नेशंस को भी समझाना. तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट वॉज अ वेरी नोबल कंसेप्ट एंड इट शुड बी अप्रिशिएटेड. इसके अलावा डीकोलोनाइजेशन, एंटी रेसिज्म, डिसआर्मामेंट, या फिर एशियन सॉलिडारिटी, जैसे बैंडंग कॉन्फ्रेंस 1955 में, ये सब में जो इंडिया विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पंडित नेहरू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हु वाज इन प्रैक्टिकल पर्पसेस द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया आल्सो अलोंग विद बीइंग द प्राइम मिनिस्टर. तो वहां पे आप पाएंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया अपने स्ट्रेंथ से ज्यादा अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाया बिकॉज ऑफ द पॉलिसी इनिशिएटिव्स टेकन बाय the early leaders. Got it? So these are the various aspects which you need to mention in this particular answer, and while summarizing this particular question you need to, or this particular answer you need to summarize as well as talk about the balancing effect which was brought by the amalgamation of all these activities in the field of economy, education or international relations. And this balancing act basically helped India to hold its ground and reach the stature which India has reached till now. Got it? Now let's move to the last question from the history section. The last question is based on world history, and the question is, जैसे आप देख ही रहे हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है ना, हड़प्पा पे क्वेश्चन आ गया आपका, मीडियवल पे क्वेश्चन आ गया, आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन आ गया आपका. तो आप समझिए इस बात को, आप किसी भी फील्ड को खुला नहीं छोड़ सकते हैं, आपको हर एक एस्पेक्ट को ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा. यू कांट लीव एनीथिंग अपार्ट, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट यू नीड टू प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स. जैसे चंदेला वाला क्वेश्चन ही हो गया या ज्योतिराव फूले वाला क्वेश्चन हो गया, until unless you write answers, a varied kind of answers, diversified answers, you will not be able to handle these kind of questions. Knowledge होने के बावजूद भी हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस आपने पहले से अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो. ओके, नाउ लेट्स लुक इनटू द वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैज एंड्यूरिंग रेलेवेंस. Enduring basically means long lasting, enduring relevance to the contemporary world. Explain. Again a 15 marker, 250 word limit. Got it? So how to approach this kind of question? Now in this kind of question, first of all you need to mention, if you know the year of French Revolution, it will be really appreciated, but if you are unable to recall it, it is fine. Okay,
Don't get worried about these kind of dates and years and everything. If you know the concept, it is suffice. Still, I'll mention it. 1789 to 99. This was the period when the French Revolution took place, and you need to mention about the various ideas which were born out of this particular revolution, which was liberty, equality, fraternity. Liberty, equality, and fraternity. Got it? Popular sovereignty. Got it? So these are few concepts which were born out of, or ideas which are born out of French Revolution, which you need to mention, because until unless you mention them, you will not be able to tell that how these ideas had an enduring relevance to the contemporary world. क्योंकि ये सारे के सारे ideas आज भी उतने ही important हैं. Got it? Now, first of all, we need to look into the enduring relevance, and for that, we'll have to substantiate it. How to substantiate it? By giving the various arguments in favor of it, and that those arguments will be based on some points, and those are, first of all, democracy and republicanism. Next one is equality and social justice. Third one is human rights. Fourth one is secularism. Then nationalism, and last but not the least, economic and social reform. So, the enduring relevance was brought by all of them. Okay, and these are the reasons because of which enduring relevance French Revolution still holds enduring relevance in the contemporary world. So ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने पड़ेंगे. जैसे कि अगर पहले पॉइंट की बात की जाए तो आजकल के मॉडर्न रिपब्लिक्स में और आजकल के जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं उसके अंदर जो सॉवरेनिटी की आइडिया है या पॉपुलर सॉवरेनिटी की आइडिया है विच culminated into democracy and republicanism, it was brought by French Revolution only. Okay, and that you need to mention while answering this kind of question. The next one is equality and social justice. In equality and social justice, you need to mention that कहीं ना कहीं जो क्लास हायरार्कीज हैं और साथ ही साथ जो मूवमेंट्स हैं इन क्लास हायरार्कीज को अपोज करने का, चाहे रेसिज्म के अगेंस्ट मूवमेंट्स हो, चाहे किसी भी तरीके की आइडियाज और डेमोक्रेटिक आइडियाज के रिलेशन में जो मूवमेंट्स हो, उन सब की उत्पत्ति, उन सब का जो सोर्स है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही है. बिकॉज फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज द वन हु आस्क्ड फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ. ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये फर्स्ट टाइम ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्केल, ऑन अ वेरी रेलेवेंट स्केल फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही मेंशन हुआ था, एंड दैट यू नीड टू मेंशन व्हाइल आंसरिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. गॉट इट? द नेक्स्ट वन इज सेक्युलरिज्म. नाउ अगेन द सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द चर्च, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड इट वाज ब्रॉट बाय फ्रांस ओनली. और फ्रांस ने जिस तरीके से चर्च को स्टेट से सेपरेट किया वो तो अपने आप में एक इशू भी बनता चला गया आगे चलकर. आप आज के टाइम पे देखेंगे कि
अगर आप फ्रांस के बारे में कोई भी न्यूज़ पढ़ते हैं अबाउट द काइंड ऑफ सेकुलरिज्म दे प्रैक्टिस, देन यू गेट टू नो दैट you need to, a person who is entering a public institution, say a public school, they have to take out each and every religious symbols. So there are a lot of people, like say there are Muslims and Muslim girls who go to these schools, they take out their abayas, they take out their burqas before they enter the institution, because it is strictly not allowed. And even some Sikhs had to face the wrath of it also. Okay, so this is how the French have shaped the secularism across the world through the concept of separation of church from the state. Next is nationalism. जो civic nationalism है, जिसके अंदर की जो nationalistic ideas है, they are based on some rights, some people's movements, not out of the interest of the monarch. ये कंसेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आया है, और इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि यही जो आइडियाज हैं, दे वर द प्रिकर्सर ऑफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड इन जनरल एंड इंडिया इन स्पेसिफिक. ओके, देन देयर आर अदर इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स ऑल्सो. जैसे आपने सुना होगा फेमसली लेफ्ट पार्टीज एंड ऑल. ये लेफ्ट पार्टी जो है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही वहां पॉसिबल हो पाया था. जो लोग लेफ्ट में बैठे, जिन्होंने इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स की बात की, उनको लेफ्टिस्ट कहा गया, और वो आज तक चला आ रहा है. आर यू गेटिंग मी? सो ये सारे के सारे आइडियाज जो हैं, इनका जो सोर्स है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही है, एंड दैट्स व्हाई इट हैज एंड्यूरिंग रेलेवेंस. ओके, नाउ व्हाट टू राइट इन द कंक्लूजन. कंक्लूजन बहुत ही सिंपल है इसका. यू नीड टू समराइज द होल बॉडी. Okay, nothing new needs to be added, because it's a world history kind of question. Of course, you can write about that such particular concepts which were brought by French Revolution need to be revisited and need to be looked in this new world with new glasses. Of course, you can write these kind of lines, but still, even if you summarize all the points, then also it will be suffice. Okay, and it was supposedly an easier question. Okay, so that is all. We have discussed all the GS1 questions, and all the GS1 questions as far as history is concerned, and you will get all the other discussion videos also. Like yesterday essay was uploaded, and in the same way polity and IR and the whole GS papers will be discussed and be provided to you from this platform of Shriram's IAS. Okay, that's it from my side. Thank you.